Hello everyone, welcome again. Have you ever thought that the things you are using in your day to day life, from where these things come? क्या तुमने कभी सोचा है that the pen, the pencil, the notebook you are using, from where these things came and who made them? So this is the very important things for our life, that we are using lots of things in our day to day life, but we don't know that from where these things are coming and who are making these things for us, and what are the people doing to make these things. And this is a very interesting thing for you also. Today we will learn about this in our geography 5th chapter, industries. This is our new chapter. Its name is industry, and we will learn about this. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing, and it started its life as part of a tree? It was cut down and transported to the pulp mill. There, the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemical and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press, where ink made from chemicals was used to print the line on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached to your hands. This is the process of making a notebook. So, secondary activity of manufacturing change raw material into product or more value to people. Means सबसे पहले उन्होंने ट्रीज कट करे, उनसे पल्प बनाया, देन पल्प से पेपर बनाया, देन पेपर से नोटबुक बनी और फिर वो आप तक मार्केट में पहुंची. यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जिसको हम बोलते हैं, या फिर जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट. ये जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ये क्या करती है? रॉ मटेरियल को किस में चेंज करती है? किसी प्रोडक्ट में, for more value to people. As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of the manufacturing process. The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. And कौन ये सब चीज़ें बनाता है? Who make these things? मीन कहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं? What is the name of the place? It is industry. Industry refer to an economic activity that is concerned with production of goods. Goods means जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन्हें हम goods भी बोलते हैं. तो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ये कहाँ पे होता है? इट इज कंसर्न इन एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहा जाता है दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. थस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोयल, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर. मीन्स अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं. यानी कि स्टील इंडस्ट्री क्या करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, स्टील के गुड्स बनाती हैं. कोयल माइनिंग इंडस्ट्री क्या करती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ कोयल. और टूरिज्म इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडर. दैट एंड यू नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो कि 3 टाइप्स ऑफ वर्क करती हैं. एक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोयल एंड सर्विस प्रोवाइडर होती हैं. Now we will learn about classification of industries. Industry can be classified on the basis of raw material, size and ownership के basis पे हम इसे classify कर सकते हैं. First is on the basis of raw material. Industry may be agro based, mineral based, marine based and forest based depending on the type of raw material they use. Agro based industry use plant and animal based product as their raw material. Okay. And food processing, vegetable oil, cotton, textile, dairy product and leather industry are example of agro based industries.
यानी कि रॉ मटेरियल जहाँ हमें मिलता है वो उसमें आता है सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्रीज में वही होते हैं जैसे कि जो फूड प्रोसेसिंग करे, जैसे वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज feed other industries. Iron made from iron ore is the product of mineral based industry. This is used as raw material for the manufacturing of a number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches. Marine based industry use product from the sea and ocean as raw material. Industries processing seafood or manufacturing fish oil are some example. यानी कि आपने पढ़ा mineral based industries, it works with the minerals like iron, coal, etc. Marine based industry, it works with the ocean as raw material. Sea and ocean, manufacturing fish oil are some example of marine based industry. Next is forest based industries. Forest based industry basically utilize forest product as raw material. The industries associated with forest are pulp and paper, pharmaceuticals, furnitures and buildings. नेक्स्ट जिसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं वो है साइज के बेसिस पे. इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन based on size. Okay, industry can be classified into small scale and large scale industries. Cottage or household industries are a type of small scale industry where the products are manufactured by hand by the artisans. Basket weaving, pottery and other handicrafts are example of cottage industries. Small scale industries use lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volume of products. Investment of capital in higher and the technology used in superior in large scale industries. Silk weaving and food processing industries are small scale industries. Production of automobiles and heavy machineries are large scale industries. So there are some other different type of industries. नेक्स्ट है ओनरशिप. ओनरशिप के बेसिस पे भी हम इसे डिवाइड करते हैं. लाइक ओनरशिप, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. प्राइवेट तो अलग अलग टाइप की में है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. ओनरशिप के बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं. तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, किसी एक पर्सन की होगी वो इंडस्ट्री या फिर अलग अलग कई पर्सन मिलकर एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं. द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. तो जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है वो गवर्नमेंट स्टार्ट करता है, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. और नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. इसमें आधे शेयर किसी पर्सन के होते हैं और आधे गवर्नमेंट के होते हैं, यानी कि आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट्स एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर और बोथ. Anand Milk Union Limited and Sudha Dairy are a success stories of a cooperative venture. So किसी भी इंडस्ट्री के लिए यू कैन सी इन फिगर 5.3. तो लोकेशनल फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या क्या, कोई इंडस्ट्री कहाँ पे हमें स्टार्ट करनी है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं. उनमें है सबसे पहले रॉ मटेरियल्स, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वाटर, मार्केट, कैपिटल और लेबर. ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि अगर हमें कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री, फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के क्या है लोकेशन देखने के लिए, तो उसके लिए ये है. सुधा डेयरी जिसका मिल्क हम लोग यूज़ करते हैं, सुधा मिल्क, सुधा डेयरी. You can see in figure 5.2. It is an good example, successful story of cooperative venture.
फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशंस जो है वो इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करती है, उनके बारे में पढ़ेंगे. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. Means a person will start industry or a factory in a place where he will get raw material easily, like land. रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, लैंड शुड बी अवेलेबल इजीली, वाटर शुड बी अवेलेबल इजीली, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट. दीज आर द मेन थिंग टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री आर situated where some or all of these factors are easily available. Sometimes the government provide incentive like subsidies, power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. Industrialization often leads to development and growth of towns and cities. तो कभी कभी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है. गवर्नमेंट जो है चाहती है कि किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगे ताकि वहाँ के लोगों को जॉब अवेलेबल हो सके. इंडस्ट्रियल सिस्टम. नेक्स्ट इज टॉपिक इज इंडस्ट्रियल सिस्टम. एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट of inputs, process and outputs. The inputs are the raw material, labor and cost of land, transport, power and other infrastructure. The process include a wide range of activities that convert the raw material into finished products. The outputs are the end product and the income earned from it. In case of the textile industry, the input may be cotton, human labor, factory and transport cost. The process include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. The output is the shirt you wear. So this is the industrial system. तो इसमें इनपुट और आउटपुट दो चीज़ें होती हैं. इनपुट में हमें उसके अंदर रॉ मटेरियल चाहिए होता है और आउटपुट में हमको क्या मिलता है, जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है. लाइक इफ़ वी आर डूइंग द manufacturing of a shirt, if we will read about the manufacturing of the shirt, then input is including gaining, spinning, weaving, dyeing and printing, and output is the shirt you wear. Next is industrial region. Industrial region emerge when a number of industries located close to each other and share the benefit of their closeness. Major industries region of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. These are the major industrial region. You can see in figure 5.4 वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल रीजन. जो ब्लैक कलर में शो हो रहा है वो इंडस्ट्रियल रीजन है और जो वाइट कलर में है वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल बेल्ट है. ये जो ग्रे कलर में वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट इनको बोलेंगे, और जो इंडस्ट्रियल रीजन है दीज आर इन ब्लैक कलर. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मैप. Industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coalfield. India has several industrial regions like Mumbai, Pune cluster, Bangalore, Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad, Barodara region, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam, Guntur belt, Gurgaon, Delhi, Meerut region, and the Kollam Thiruvananthapuram industrial cluster. These are the basic example of the industrial places of India. Next topic is industrial disaster. In industries, accident disaster mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous materials. One of the worst industrial disaster of all time occurred in Bhopal on 3 December 1984 around 12:30 am. It was a technological accident in which highly poisonous methyl isonide (MIC) gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness,
and impaired immune system and gastrointestinal disorders, etc. So these are some industrial disasters which happen. And Bhopal gas tragedy and Bhopal on 3 December 1984, this is one of the most tragic accident of the industrial area. In other incident on 23rd December 2005, due to gas well blowout in gas Kuya, Chongqing, China, 243 people died, now 9,000 were injured and 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered burn to their eyes, skin and lungs from the gases. Risk reduction measures. Densely populated residential area should be separated far away from the industrial areas. यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया कभी भी वहाँ पे नहीं बनाने चाहिए जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है. People staying in the vicinity of industrials should be aware of the storage of toxins and hazardous substance and their possible effect in case of an accident occurs. यानी कि अगर कोई भी प्लेस है जहाँ पे इंडस्ट्री स्टेपल हो चुकी है तो वहाँ के लोगों को उसके हज़ार्ड्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए. मीन्स वी शुड इंट्रोड्यूस द पीपल और वी शुड टेल द पीपल अबाउट द हज़ार्ड्स एंड द सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट in case of an accident occur. Fire warning and fighting system should be improved. Storage capacity of toxic substance should be limited and pollution depression qualities in the industrial should be improved. Next topic is distribution of major industries. यानी कि इंडिया में या अदर कंट्रीज़ में जो मेजर इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. डू यू नो दैट इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज़. These include information technology, wellness, hospitality and knowledge. Distribution of major industries. The world's major industries are the iron and steel industry. तो दुनिया की सबसे मेजर इंडस्ट्रीज़ में आता है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ आते हैं. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. The iron and steel and textile industries are the older industries while information technology is an emerging industry. The countries in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan and Russia. Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan. The major hubs of information technology industries are the Silicon Valley of Central California and Bangalore region of India. Okay. Glossaries में आपका smelting means it is a process of which melt are extracted from their ores by heating beyond the melting point. It's called smelting. किसी भी मिनरल को या कोई भी हमारा आयरन और या कुछ भी होता है उसको मेल्ट करना, उसके बॉइलिंग उससे ज़्यादा हीट देना, उसको मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा, उसको हम कहेंगे स्मेल्टिंग. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. Like other industries, iron and steel industry too comprise various inputs, process and outputs. This is a feeder industries whose products are used as raw material for other industries. The inputs for the industry include raw materials such as iron ore, koila and limestone, along with labor, capital, site and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel, which may be used by other industries as raw material. Okay, understand? Steel is tough and it can easily be shaped, cut or made into wire. In figure 5.5, manufacturing of steel, you can understand this through the figure. 8 ton of koila plus 4 ton of iron ore plus 1 ton of limestone, तो हमें जाके 1 ton of steel जो है हमें अवेलेबल होगा. Steel is tough and it can easily be shaped.
cut or made into wire. Specially, alloy of steel can be made by adding small amount of other metal such as aluminium, nickel and copper. Alloy gives steel usual hardness, toughness or ability to resist rust. Steel is often called the backbone of modern industry. Okay, what is called the backbone of modern industry? So steel is called the backbone of modern industry. Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals. Ship, train, trucks and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles we use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are mined with steel equipments. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. Before 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. Later, the ideal location for the industry was near coal field and close to canal and railways. After 1915, iron and steel industry began to be located on large areas or flat land near seaports. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had been imported from overseas. In India, iron and steel industry has developed, taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Baranpur, Jamshedpur, Rourkela, Bokaro are situated in a region that spread over 4 states: West Bengal, Jharkhand, Orissa and Chhattisgarh. Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are other important steel centers. Utilizing local resources, India's steel production increased from 1 million ton in 1947 to 30 million ton in 2002. Next topic is Tata Iron and Steel Company, Jamshedpur. इसको हम टिस्को भी बोलते हैं. टिस्को means Tata Iron and Steel Company Limited. Before 1947, there was only one iron and steel plant in the country. 1947 से पहले सिर्फ एक ही आयरन और स्टील प्लांट था इंडिया में. अब तो बहुत सारे हो गए हैं. Tata Iron and Steel Company Limited. It was privately owned. After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plants. TISCO was started in 1907. TISCO जो है 1907 में स्टार्ट किया गया था at Sakchi near the confluence of the river Sabarnarekha and Kharkai in Jharkhand. Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country. Sakchi was chosen to set up the steel plant for several reasons. क्योंकि वहाँ से रिवर पास थी प्लस रेलवेज भी पास था. दैट वाई उन्होंने साक्षी को चूज़ किया टिस्को को लगाने के लिए, टिस्को का प्लांट लगाने के लिए. दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑफ द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन. इट वाज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स एज वेल एज कोलकाता विच प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट. टिस्को गेट्स coal from Jharia coal fields and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Orissa and Chhattisgarh. The Khargai and Subarnarekha rivers ensured sufficient water supply. तो वहाँ से ये सुब्रन रेखा जो रिवर थी वो पास पड़ती थी. गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड एडिकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट. इन जमशेदपुर several other industrial plants were set up after TISCO. They produce chemical, locomotive parts, agricultural equipment, machinery, tin plate, cable and wire. The development of the iron and steel industry opened the door to rapid industrial development in India. Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. The Indian iron and steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. It also includes secondary products, rolling mills and ancillary industry.